स्टार्टअप ओडिशा आउ ओडिशा लाइफ तरफ आपन को स्टार्टअप स्टोरी रो सप्तम संस्करण रे मु स्वागत करुच्ची सुब्रत बागची। आज आम गहन रे अछंती अमृत आचार्य। देखंतु 33 वर्ष बयस जेटवर्क परि गोटे यूनिकॉर्न ठिया करिसंती जार आजिर मार्केट वैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन होची 10,000 कोटी टंका। स्वप्न देखुचंती 40,000 कोटी टंकार कंपनी ठिया करेबे। आसंतु कथा हबा अमृत आचार्य सांगे। वेलकम टू स्टार्टअप स्टोरी। अमृत, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। आपण निजर बहुमूल्य समय देइचंती स्टार्टअप स्टोरी आसचंती। ओडिशा कोन भारत वर्षर हाथ गणंता कई जण यूनिकॉर्न मान को भितर आपण जणे। So it's a great achievement. We are very proud of what you have achieved, both as Indians and of course as an Odia. And on behalf of all Odias, would be very keen to know about your success story. आपन जीवन यात्रा केमती रहितला। आगो आमे कथा हवा आपनकर कटक दिन थारु। कटक रे आपन जन्म होइचंती। पिला बेला कथा टिके कहंतु, बापा मां को कथा टिके कहंतु। First of all, thank you so much for माने मो संगे कथा हवा पई। I'm really excited to talk to you. तो या मैंने अपन जमी कहले मु कटक रे बन हेतले किंतु मु कटक रे ग्रो अप करनी। आई ग्रो अप इन भुवनेश्वर। मोर फादर एक्चुअली इंश्योरेंस थे, तो एट दैट टाइम ही वाज ट्रैवलिंग थ्रू आउट ओडिशा, किंतु से मैंने डिसाइड कले कि आई शुड हैव अ स्टेबल चाइल्डहुड। तो बोथ माय मदर एंड मी आम भुवनेश्वर को मूव कलो। तो पूरा मोर 12th जाए मु भुवनेश्वर थी। आई थिंक फर्स्ट 2 years मु बलांगीर थी। कोठी पढ़िले भुवनेश्वर? भुवनेश्वर रुचिका हाई स्कूल रे मु पढ़थले। तो आरंभ से प्री स्कूल नर्सरी स्कूल था, किंतु अराउंड द सेम टाइम से मैंने भी डिसाइड कले कि 10th जाए खोलिए। तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट बैचेस से अनुसार। तो 10th जाए मु रुचिका रे थी, गंगानगर रे। घर भी से फॉरेस्ट पार्क पाखे था। 12th पाई मु बीजेपी। तो ये जो आपण पढ़ुतिले रुचिका स्कूल रे, सेठी आपनकर पिला दिन कटला, शैशव कटला, कैशोर कटला। सो व्हाट वर योर अदर इंटरेस्ट? पाठ तो निश्चय बहुत भलो पढ़ुतिले, किंतु पाठ बाहर कौन इंटरेस्ट थला आपनकर? नहीं, एक्चुअली मोर पिला दिन बहुत इंटरेस्ट थला। तो मु माने बेले जोक करे कि मु जदी अलग जगह भी कोठी बन हे थांती ताले मोर मे बी लाइफ आउटकम मे बी डिफरेंट हे थांता। कारण ओडिसा जहाले भी टिकिना को माने एते अपॉर्चुनिटी नथिला। तो मु डिबेट्स पे जाउतली, माने स्कूल को रिप्रेजेंट करतली। मु क्रिकेट खेलची ओडिशा स्टेट पे, टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत गुड जिन करछि एक्चुअली। वेरी नाइस। तो जो आपण पिला दिने ओडिसा रे बढ़िले, एथिरे आपण बापा मांकर एकमात्र संतान, तेणु बापा मांकर निश्चय बहुल भाव रे प्रभाव पड़थिबा आपण को ऊपर। से विषय टे कहंतु, बापा मां आपनकर किपरि भाव रे आपन को सपोर्ट करि आछंती, केतेटा इंडिपेंडेंस दैछंती, आपण जने उद्योगी हिसाब रे आपण कोन भाबुछंती, तांकर कोन प्रभाव थिला? मैंने मो पेरेंट्स को मो ऊपर बहुत प्रभाव है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोर फादर मुझे जमी कहते से सब ट्रैवलिंग करते। पोस्टिंग बलांगीर, बालेश्वर एमती जगह थी। मु भुवनेश्वर थी। तो आई यूज्ड टू सी हिम ओनली एवरी वीकेंड बेसिकली। आ मो मदर भी अर्ली ऑन डिसाइड कले कि से भी करियर प्रोफेशनल है, से शी विल नॉट बी स्ट्रिक्टली अ होम मेकर। तो फॉर माई वेरी यंग टाइम, आई थिंक 7-8 years रू आई वाज काइंड ऑफ ऑन माई ओन। माई माँ दिन सारा शी विल बी एट ऑफिस। I'll see her in the evening, and my father, I'll see him on a weekend. This must have given you a tremendous independent spirit. हाँ, it gave me a lot of independence. तो मैंने पिला दिन से I had and I always had my parents' support. किंतु से मैंने they were never overbearing parents कि यह करो। They would guide me कि जब मैं किसी wrong direction में जाऊँगी तो they will say no, don't do this. But otherwise मैंने largely they left me to figure things out मैंने on my own. तार कौन भी अच्छी कि मुझे आई रियली हैड टू फिगर थिंग्स आउट। कारण मोर जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे 12th पर कौन पाठ पढ़ी डिसाइड करबा भावली। मोर बोथ पेरेंट्स पॉलिटिकल साइंस मेजर, से माने उत्कल यूनिवर्सिटी रे आर्ट्स रे पॉलिटिकल साइंस करथिले। किंतु मोर इच्छा थिला मु इंजीनियरिंग डायरेक्शन जीवी। मोर फादर कर बहुत इच्छा थिला कि मु सिविल सर्विसेज जीवी। मोर मदर कर बहुत इच्छा थिला कि मु डॉक्टर डायरेक्शन जीवी। किंतु जेतले मु डिसाइड कली कि नहीं मते ए डायरेक्शन जेबर अछि, से माने हां कहले ओके वी सपोर्ट यू। दो दे हैड नो आइडिया आईटी कौन आम घर भी कहीं इंजीनियरिंग करना। तो से एस्पेक्ट रू मैंने से मैंने बहुत both your parents were also very unusual people in the sense that they have charted a very different trajectory for themselves. से गोटे अजना बाट खोली चंती निजो पाई मध्य। आपनक संगे जेतोळे आगरु कथा आइतला, आपन कहितले जे बापा ओरिएंटल इंश्योरेंस रु मिड कैरियर गोटे ड्रामेटिक शिफ्ट करथिले।
माँ मध्य सारा जीवन सब नुआ नुआ जिनस कर तो तांकर एई जो जिनसटा गोटे एंटरप्रेन्योर पाई गोटे उद्योगी पाई निश्चय भाव में प्रभाव पकाउथुवो से जो कैरियर चॉइस से माने कले नुआ नुआ जिनस पछरे से माने निज जीवन को उत्सर्गित करले से विषय टे कहंतु मोर फादर का एग्जांपल लाइक आपण एमती कहले से ओरिएंटल इंश्योरेंस तांकर चाकरी आरंभ करथिले से उत्कल यूनिवर्सिटी पर जेएनयू रे पाठ पढिले तापरे ड्यू टू फैमिली प्रेशर तांकू से ही फेल्ट कंपेल्ड टू टेक अ जॉब कारण तांकर पांचटा भाई आउ देयर पेरेंट्स आर बिकम रियली ओल्ड आउ देयर वाज नॉट इनफ माने मीन्स ऑफ इनकम एट दैट टाइम तो ही हैड टू टेक अ जॉब से मते कहले आरंभ रे तांकर सेते 1000 टंका दरमा थिला 1000 टंका दरमारू से 200 टंका निज पे रखुले 800 टंका घर को पठाउले तांकर भाई को पढ़ा पढ़ाई पे तांकर घर देखा अपकीप पे तो सेतेले तांको आरंभरू से ही हैड टू टेक रिस्पांसिबिलिटी वेरी अर्ली एज किंतु ही कुडंट फुलफिल हिज पर्सनल ड्रीम्स जोटा माने तांको निजर इच्छा थिला तो जेतेले मोर 10th हे गला से भाबले कि ओके टिकेना को आई एम सेटल्ड इन सम कैपेसिटी लेट मी टेक अ रिस्क नाउ तो ही क्विट हिज जॉब ओरिएंटल इंश्योरेंस रे थिले ही क्विट हिज जॉब decided to do a PhD 40 वर्ष प्राय पाखा वर्ष थिला तांकर he had just turned 40 so he did a PhD in Australia and he was simultaneously doing a job also so he was doing a part-time PhD in Singapore he had taken a job in a university as a research mane pura really he had to start his way from the bottom he took a job as a research analyst je mane nuwa nuwa pila mane niyanti at the same time he was doing a PhD my mother of course supported him in that journey it helped ki mane more education kharcha bhi was not very high कारण at that time also I got into IT so mane fees was not very high so he did his PhD at 40 then he became academic and today actually is one of the world's leading academics in his field but he started mane at a much later age than most people तो माँ भी तो ठीक सेमती माँ भी सेमती असाधारण जिनस करछन्ते तांगे जीवन में माँ माने फर्स्ट ऑफ ऑल एट हर टाइम जॉब करबाटा ही असाधारण थिला कारण तांकर समस्त भोणी दे आर ऑल माने होम मेकर्स मॉम आल्सो हैज 5 बोथ माय मॉम एंड माय डैड हैज 5 सिबलिंग्स सिट पे से माने बदे भाभी चंदी कि तांको एना अटेंशन मिलेनी से माने दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू हैव ओनली वन किंतु बोथ माय मॉम लाइक शी हैज ऑल हर सिस्टर्स आर काइंड ऑफ होम मेकर्स and किसी compulsion न थिला but just even before marriage she was a all India radioist she was an announcer she briefly worked in lectureship so she never could be satisfied by just being at home so she started working in a NGO very early in her career and that also helped at that time that my dad jibaku chahuthile she could provide that cushion in terms of income some stable income for some time and much later in her 50s से decide कले कि okay मु निजर NGO खोलिबे तो एबे से निजर NGO चलांती so it's not a big operation very unusual because in your 50s with a successful child like yours a successful husband she has done a lot to support both of you as well as to chart her own life मनीष साहन तो टिके पछे जानती टिके रिलैक्स करंती कहंती कोन दरकार एते खटी किरी एते चारिडा बुली किरी so that's very interesting तो आपण रुचिका परे गले IIT बापा मांकर बाधा भी नथिला किंतु किछि से माने स्पेसिफिकली चाहू नथिले आपण IIT जीवे बोली आ गले तो गले IIT चेन्नई को चूज कले कहीं ना आपनकर इच्छा थला ओडिसा रो बहुत दूर को जिवे गोटे नुआ पृथ्वी देखिबे आ IIT चेन्नई रे मु सुनी छी आपनकर जीवन रे 3टी S रो आविर्भाव हेतिला बा आपनकर गोटे रियलाइजेशन हेतिला 3टी S रो अर्थ कहिबा in IIT Chennai you learned selling बिक्री केमती करिया को पड़े द्वितीय जिनस हला आपण श्रीनाथ को भेटेले आपनकर जे परवर्ती काल रे को फाउंडर हले आपनको गोटे सॉलिड बॉन्ड रहिला जा फल आपण गोटे विराट बड़ कंपनी आज स्टार्ट करि पाछंती अवश्य ता गुरु आपण श्रीनाथ ITC रे मध्ये एक संगे काम करथल तनु ओवर टाइम बॉन्ड बढ़ी गला आ तृतीय एस हले शरण्य जे आपनकर जूनियर थिले बोधे जहाँ संगे आपणकर परिचय है परिचय रु प्रेम है प्रेम रु परिणय है सो सी गोटे अध्याय ये जो 3टी S गोटे केवल आपण जीवन में नुह गोटे उद्योगी जीवन में यही 3टर कौन महत्व रोचे कौन इम्पोर्टेंस रोचे सेलिंग फाइंडिंग द राइट को फाउंडर एंड ऑफ कोर्स फाइंडिंग द राइट लाइफ पार्टनर या मैंने आपण बहुत
simple way articulate करचंती हमने 4-5 year journey किंतु I would say those 4-5 years बहुत transformational थिला मो पे तो number one मैंने this whole decision of going to IIT Chennai मैंने इटा straightforward नथिला कारण both my parents wanted me to go to Kharagpur कारण घर रो पाको थिला खरगपुर मिल भी जाइला मते किंतु तारे मन माँ कहले कि खरगपुर जरी जीव मु प्रति वीकेंड रे ट्रेन नेकरी घर को आसी तो पिठा पणा ने के स्थान हठात कि मो मुंडरे चमकिला कि अरे मु माने you lose your liberty. I want to be little bit I want to discover myself तो then घर केते दूर जाई परबी not exactly किंतु decided to go to Chennai मोर स्कूल रे जने सीनियर थिले एक्चुअली से चेन्नई जॉइन करथिले तो तांग संगे कथा कि बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि हां भलो रे हे परबो और एक्चुअली हम खरगपुर भी गलु काउंसलिंग पई सेठी देखिलो कि पाखरे किछि नाही मोरले भुवनेश्वर छोटो जगह कि तो आहुरी छोटो जगह थिला खरगपुर तो से मोर सेटा एक्चुअली थिला कि मो टिके माने वर्ल्ड देखिया पई थिला इच्छा तो से टाइम मु चेन्नई बॉम्बे दिल्ली रे टिके प्रेफरेंस पकेले चेन्नई रे मोर हेगला तो चेन्नई रे एक्चुअली एज आई सेड माने वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल 4 इयर्स तो वन इज माने आमे सब इंजीनियर आपण भी पथे इंजीनियर मु एक्चुअली इंजीनियर नो मो आपण को बापा जमते मां बापा मा दी जण पॉलिटिकल साइंस रो छात्र थिले आंबळे भी बहुत कम पिला इंजीनियरिंग पढुथिले डॉक्टर हबा पे अधिक इच्छा रहउतला मो बाचे तो हाथ गणता इंजीनियर थिले सो आई आल्सो स्टडीड पॉलिटिकल साइंस वाओ वेरी इंटरेस्टिंग कोन तो माने आई वाज बेसिकली एन इंजीनियर आई न्यू हाउ टू डू मैथ आई नीड टू डू फिजिक्स माने से बस माने पाठ पढा रे सेटा ही आसिला किंतु when I entered this college first of all language was a cultural difference because nobody else spoke Korea so I had to learn how to speak English conversationally माने भलो रे समस्तन संगे and over the next 4 years say skill set जोटा beyond माने जोटा technical skill set but just selling is one way to articulate but just presenting who you are to the world कारण today if I look back hindsight रे everything is selling निजे को तोली धरिया को पड़िबो हां माने तोली धरि माने गोटे आपण इंटरव्यू रे लोक मान से कथा कोछन आपण निजे को सेल करछ हां निश्चय एज अ कैंडिडेट निश्चय माने सेलिंग इज नॉट एज सिंपल कि आपण गोटे प्रोडक्ट सेल करछ एबे हमें एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम रिप्रेजेंटिंग द कंपनी आई एम सेलिंग द कंपनी बोथ इन दिस फोरम टू इन्वेस्टर्स टू एम्प्लॉइज देयर गोटे नुवा 3 years ago when we started the company nobody had heard about us amar kichi funding भी नथिला सेतले I had to interview each and every person and convince them कि spend the next 3-4 years of your life with us it will be transformative for you किंतु it's not a simple argument कि who are you काहे कि से माने मदे ट्रस्ट करिवे ठीक क्वेश्चन तो it's an art it's a science also it's not कि माने everything is there are good books written about it but fundamentally it comes down to at least mo point जहाँ work करची is just to be yourself माने just that authentic don't try to be somebody else focus on your strengths represent yourself in the best possible किंतु manner कम्युनिकेट करे को पड़ियो अन्य को निज पृथ्वी को टाणी आनियो को पड़ियो माने तोली धरिया को पड़ियो माने मेक योरसेल्फ इंटरेस्टिंग हां ऑफन इंजीनियर्स मानकर हमरो नेचुरल इंस्टिंक्ट होची गोटे माने गोटे फेमस कार्टून रे भी थाए जने मैथमेटिशियन और फिजिशियन रे रूम रे अछंती निया चलची मैथमेटिशियन को होची कि हां देयर इफ यू पुट वाटर देन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बट दैट्स इट से किछि करंती नहीं but you have to actually take that extra step and communicate your intent कि मु एहा भाबुची very clearly माने there should be no ambiguity somebody who is speaking with you should not be doubting कि हे कहूची गोटे अलगा जिंस होची so that is what I have found work for myself just be very clear very direct very authentic just not माने don't be afraid of confrontation also sometimes and the ability to take no for an answer rejection no is part of life like mane the amount of times I've got no is like I can write a whole book kana mane especially when nijero gote aspiration to thai aspiration our reality between there might be a gap and today that gap may be high but over a period of time that gap can come down so if that gap is high you may get a lot of no's kana people around you may not see what you see about yourself kintu what is important कि just take steps incrementally work करो गोटे बही अच्छी atomic goals करी basically whole crux of that book is be 1% better every day and over 1% better every day over 365 days माने you become a different person altogether
वर्तमान कथा हबा को फाउंडर श्रीनाथ विषय तापर शरण्य विषय श्रीनाथ मु luckily we grew up together in IIT Madras we were in the same hostel आमे सिंगापुर भी गोटे एक्सचेंज प्रोग्राम पे जाइलु सेतले मो फादर सिंगापुर रे थिले तो आई वांटेड टू बी क्लोज टू हिम तो मु सिंगापुर रे गोटे एक्सचेंज प्रोग्राम पे अप्लाई कली मोर हे गला श्रीनाथ रे भी हे गला तो आमे गोटे सेमेस्टर श्रीनाथ मु किछ जन अलगा संग पूरा वी स्पेंड 6 months very closely that's when we got really close and fortunately जेतले मैं ग्रेजुएट कलो टर्न्ड आउट कि हमें सेम कंपनी नाम को जॉब भी मिल गला जेटा जे आईटीसी अब आईटीसी रे मल्टीपल डिविजन्स थाए तांकर गोटे कहंती कि रशियन रिवर्सल डिवीजन तमे चूज करबनी डिवीजन तुमको चूज करिवो फॉर्चुनेटली केमती भी हमर जन को सेम डिवीजन भी एलोकेट हेतला और हमर बॉस भी सेम लोक थिला हु वाज अनदर एस इन माय लाइफ संजीव रंगराज ही वाज द सीईओ ऑफ दैट डिवीजन एवं से आपनकर कंपनी रो प्रथम इन्वेस्टर से हमर कंपनी रो प्रथम आपनो मेंटर भी रही ही हैज बीन अ बिग मेंटर टू माय लाइफ तो मैंने आई हैव नेवर मेट अ मैन लाइक हिम कि मैंने he decided that at his age 50s re ki he wanted to take 10 young people fresh out of college as under his wing kichi compulsion nathila but he just decided that he is at that stage in his life where he wants to mentor people and he wanted to give in the process तो mu just graduate karchi Srinath mu both of them were reporting to him and that time I did not realize how unusual it is ki you know your first job to report to the CEO of a large company, not a CEO of a small company, and be given that kind of responsibilities. The first responsibility he gave me was to build a new factory for them. I was just out of college, I had no idea. So, but he felt ki he saw something and he said ki you can be a part of this 6-member team who is building this new factory. Jahar budget was 1,000 crores, of which personally I was handling almost 400 crores. People who were 40s in their 50s, they were reporting to me. So I had to learn a lot about myself ki how do I influence people without having any authority. As a 20-year kid, what authority do I have? Kichi nahi. And Srinath Umoro, similar journey. Both of us like grew up at IIT Madras, went to ITC, reporting to the same boss. And our journey bahut similar at that point. We were both doing things which we had no business doing at that so there was some kind of an unusual divine connection. Yes. That you were like almost in a cosmic sense, you are like twins. You can say that. Right? Like we, you know, we know a lot about each other, considering how far we go. But at post ITC, we just took some separate path. I decided to kimu USGB MBA koribi, and Srinath actually he went directly into the entrepreneurship ecosystem. So he spent time in 2 startups. But then when I came back, I had to call him the first time. Like he was the first person I called. Excellent. Srinath, look, I'm back, and Srinath's like, dude, amazing. Kuch karte hain. That's it. That was it just started with like, let's do something together. There was not more clarity beyond that. Let's talk about Sharanya because she has been an abiding force in your life. आपनकर बहुत बड़ा आपनकर supporter रही चंती. जदियो आपण माने एकठी काम करंतनी कंपनी रे किंतु throughout your life and particularly जेतबेला आपण निजर किछि करिया को चाहूले अथच टिके आपनकर हेजिटेशन थिला जेतबेला इंडिया फेरी आसिले कल चाकरी खोजिबे बोली शरण्य आपन को कहितले इंडिया फेरुचो काहे कि जो चाकरी ही करिवार थिला राइट तेनु टिके शरण्यकर किंतु आपनकर आईआईटी दिन रे शरण्य को नेकरी एबे पर्यंत आपनकर जो संपर्क रहिछि परिचय रहिछि टिके कोन ता विषय I mean amongst all of these things the Sharanya is second to my parents in terms of influence on my life. So I would not classify her role ki merely support. She's been in the thick of things even today. Like any business strategy decision which I want to reflect, introspect by myself before sharing with others. I'm always sharing it with her, and she's always able to kind of give very very solid advice. I think Sharanya and I met in IIT Madras again. So she was 2 years junior to me. We got a cultural festival organized called Sarang. Actually again involved a lot of selling. We had to convince all these large companies to come and put money into us into a college festival, which again today I'm shocked that we were able to pull it off. But she and I worked together in that event. That's how we kind of got to know each other over a period of time. I mean, we started dating. I was just about to graduate from college,
and take a long distance tilla for a long time. And then she was also in the US around the same time I was there. And when I was looking to come back to India, she was the one who actually catalyzed this thing. Karna moro setrele, I was didn't get my H1B visa, so I spent some time with McKinsey US re, tapare in Australia. And then she came, she was with me at Australia, and then we were discussing next con koribu. And the default option was just wait till this visa thing comes normal and then we'll go back to US. But then we reflected ki why should we optimize our lives around a visa? We should optimize our lives around what we want to do. And uncertainty jo thila gote life re ki next 6 months kemti habo. She was very spot on in her articulation ki uncertainty is not a bad thing. Uncertainty can actually help you clarify a lot of things, and in our case it did. So we just decided overnight ki we don't want to optimize our lives around things which are outside our control. We want to, this is the peak of our youth, we should do things which make sense to us. So I didn't decide kulu overnight कि we are coming back to India. मैंने निज जीवन रो दायित्व निज को नवा पड़ो जहाँ माने आउटसाइड इन्फ्लुएंस ता ऊपर जदि हमें सब कुछ छाड़ी दबा ताले will drift in an ocean. Yeah, I mean it comes down to luck or randomness. Take care of your oar and take care of your boat. Yeah. Amrit, आपण IIT रे पढ़िले, IIT पर ITC पर कंपनी रे काम करले, तापरे आपण UC बर्कली रु MBA करछंती, हास स्कूल रु, एवं तापरे आपण मैकिन्जी परी कंपनी रे काम करले, US रे काम करले, बे एरिया रे काम करले, ऑस्ट्रेलिया रे काम करले, इत्ते बड़ कंपनी रे मैकिन्जी परी कंपनी पृथ्वी रे बोधे इज वन ऑफ द टॉप, नॉट वन ऑफ द टॉप, प्रोबब्ली इज अ टॉप स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो सेठू आपण चाकरी छाड़ी देले, सेपरी चाकरी छाड़ी देले, आउ निजर स्टार्टअप करिया कथा जेमती आपण टिका गुरु कोतले शरण्यांक संगे मिसिकरी ओवरनाइट डिसाइड कले. इटा किपरि संभव हला? हाउ डू यू गिव अप ए जॉब विथ मैकिन्जी? I knew कि after 1 year at McKinsey, it's a great place. I'm learning a lot. Kintu I did not see myself 5 years, 6 years there, becoming a McKinsey partner and giving advice to people and not knowing the advice kaun hoji and especially because mu 4 years IT se thile jo on a hardcore operations kotile. I was so hands on. I was building a factory. Factory theory. Jo mu akhi samne re it went from nothing to like one big building where 1,000 people were working. So I could never feel that connect. And when we decided to come back to India, initially before I spoke to Srinath, I was even looking at startup senior con jobs. I got a job also, and that's when Sharnya said, "We didn't come back all the way from US to Pune thare chakri kare pe, so we should give it a shot." And amaro bahagra bhi fix hai 12th December masare, and my dad was very shocked ki mu McKinsey job chhadwa pe jaunji. I remember when I got the job, he was proudly sharing it with all his friends. So, but he was a little bit shocked. Kintu se kale ki okay, bahagra purburu you figure it out. I don't want to introduce you as unemployed to all my relatives. तो भलो देखिया को बहुत क्वालिफाइड पिला किंतु चाकरी नाही हातरे झियो बावा को बसछि. Very nice. बर्तन कथा बा Zetwork विषय. Zetwork तो मो जानिबार गोटे डच शब्द. ए ना किपरि भाबरे आपण मन को आसला एवं ता परवर्ती समय जो आपने कंपनी तैयारी कले से कंपनी व्यवसाय को उठिकी जाइए व्यवसाय को साधारण मनीष बुझला परी आपन टिके बुझे कि कहतु शेष में जाना चाहबू जे ओडिशार कौन संस्था उद्योगी आपन Zetwork संगे जड़ित अच्छा कि ना. तेणु आग कथा Zetwork ना विषय, द्वितीय कथा आपनकर व्यवसाय विषय, तृतीय कथा तार ओडिशा कनेक्शन किछि रही नो. तो Zetwork को आपन कहले डच वर्ड तार मीनिंग होची फाउंडेशंस. आम मैन्युफैक्चरिंग संस्था आरंभ करूँ. मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री आप देखिए इंडिया रे टॉप कंपनी सब यूरोपियन कंपनीज L&T भी लार्सन एंड टुब्रो दुईटा डानिश इंजीनियर बैक प्री इंडिपेंडेंस आरंभ करते. और जर्मन माने स्ट्रॉन्ग माने सिनोनिमस की स्ट्रॉन्ग एक्सीलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग. तो हमको गोटे यूरोपियन ना दरकार थिला जोटा विच वुड कन्वे कि आम वी स्टैंड फॉर एक्सीलेंस एंड Zetwork meant strong foundations. Zetwork also rhymed with network. So it was a beautiful kind of combination. Zetwork. हाँ, तो सेमती combination रे we kind of converged on the name. तो आम कौन कर बेसिकली सिंपल मात्रा रे आम बहुत बड़ बड़ कंपनी के छोटे छोटे कंपनी के संगे काम करूँ जहाँ कर मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट दरकार. मैन्युफैक्चरिंग केमती हुए से आगे गोटे प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे. डिजाइन करी तापरे भाभी कि व्हाट इज द बेस्ट वे या केमती बना जाओ.
तो आम से डिजाइन स्टेज रे कंपनी को संगे पार्टनर करूँ आम को आपण आमको डिजाइन दिंतु आमर बहुत बड़ा नेटवर्क अच्छी छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर के संगे आम फिगर आउट करूँ कि कौटी बेस्ट जगह मैन्युफैक्चर करहब आम पूरा मैनेज कर हैंडहोल्ड करूँ आपण ऑर्डर टाइम डिलीवरी ऑर्डर रु डिलीवरी पर्यंत क्वालिटी कॉस्ट एंड डिलीवरी क्वालिटी टाइम एंड कॉस्ट ऑल थ्री थिंग्स यार रेंज बहुत हाई माने इट कैन बी समथिंग एज सिंपल कि गोटे साधारण स्टील पाइप टू पूरा कॉम्प्लेक्स जिनस जमती एयरक्राफ्ट इंजिन कंपोनेंट जोटा बोइंग कि एयरबस रे जाउची आमे पूरा स्पेक्ट्रम हैंडल करजु इंडस्ट्रियल्स रे मोर मोस्टली हमर फोकस किंतु लास्ट 1 ईयर में बहुत कंज्यूमर गुड्स रे भी करजु जेमती हम ए टी शर्ट गुडा आमे बहुत गुडे टी शर्ट अपैरल कंपनीज मान संगे काम करू जेमती तिरुपुर संगे हाँ तिरुपुर रे गोटे बेल्ट अच्छी लुधियाना रे बेल्ट अच्छी सूरत बेंगलोर रे बेल्ट अच्छी बहुत बहुत छोटे 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 मैन्युफैक्चरर अच्छी तो आमर इनसाइट कौन है कि गोटे छोट मैन्युफैक्चरर ऑफन माने सिंगल पर्सन कंपनी सेम प्रोमोटर सेल्स करची आ फैक्ट्री चलाउची सब कुछ निजे कर सब कुछ निजे करची आउ तांकर डीएनए से मैंने भी इंजीनियर से मैंने फैक्ट्री चलेबा को भल लागे से से मैंने निजर कंपनी आरंभ करले त आमे तांको कहले आपण फैक्ट्री ही चलांतु आमे आपण को नुवा बिजनेस देबो आ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आमे नुवा सर्विसेज लैंड करछु कि आपण फैक्ट्री को हमको चलेबा पे भी आमे हेल्प करबो आपण को रॉ मटेरियल दरकार ता पे कि लॉजिस्टिक्स दरकार तो लिटरली से स्मॉल मैन्युफैक्चर होची हमर हार्ट ऑफ आवर बिजनेस तांको कोन दरकार आरंभ रो बिजनेस दरकार तभी कंटिन्यूअस बिजनेस दरकार माने मंथ ऑन मंथ प्रेडिक्टेबिलिटी एमती ने कि थरे बंद हे जो मझरे बंद तांकर मेन इशू कि से माने 3 मास जानती ऑर्डर खोजिया पे तापर 3 मास फैक्ट्री चलांती तापर 3 मास फैक्ट्री बंद कारण टाइम लागे ऑर्डर खोजिया पे हमें तांको प्रेडिक्टेबली मंथ ऑन मंथ ऑर्डर देबो आउ तांको ऑर्डर खोजिया रे टाइम दरकार नहीं से माने दे कैन स्पेंड ऑल देयर एनर्जी जहाँ तांको मजा लागे जोटा होची तांको फैक्ट्री चलेबा भल लागे तांको तांकर इन डीएनए होसे जेमति श्रीनाथ मोर को-फाउंडर तांकर फादर ही वाज वन ऑफ दिस एंटरप्रेन्योर्स तांकर निजर गोटे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थिला से बीएचईएल थर्मैक्स एमती कंपनी रे काम करछंती एज ए इंजीनियर आ तापर कहले कि मु थर्मैक्स गोटे सप्लायर हेबी तांकर लाइफ साइकिल रे से आउ गोटे कस्टमर ऐड करे जोटा होची बीएचईएल किंतु हमें सेमती मैन्युफैक्चर को हमें 10टा कस्टमर 20टा कस्टमर 50 कस्टमर दे परिबो ऑफन एमती लोक मान नुआ कस्टमर होची नुआ रिस्क से माने भावंती कि नुआ कस्टमर होची अपॉर्चुनिटी कारण से माने पैसा देबे कि नहीं हमें ऑल दिस थिंग्स ट्रस्ट नता है स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया साउथ रो सप्लायर माने नॉर्थ रो बायर संगे तांकर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हां तो लैंग्वेज भी इशू था तो लॉट ऑफ दीस इश्यूज वी आइडेंटिफाइड माने ऑफ कोर्स all of this I mean आरंभ जाननो थलो over a period of time we have discovered the depth of the problems we are trying to solve but fundamentally to customer we'll make sure that your products get delivered on time and to the supplier हमें कहूँ कि don't worry we'll be your partner through thick and thin and of course we are doing it all through a technology led way where there's a lot of software जो all of these things coach starting from quality timelines customer को real time update जेमती आपण Zomato रे खाइबा मगोचंती आपण को से रेस्टोरेंट के ऊपर ट्रैक करछि हमें कस्टमर को पूरा ट्रैकिंग दो आपनकर ऑर्डर एबे हला नेक्स्ट 30 डेज रे सप्लायर रॉ मटेरियल किनिछि एटा गोटे फोटोग्राफ माने नेक्स्ट 30 डेज रे ट्रक रे डिस्पैच हिछि एटा गोटे फोटोग्राफ पूरा फुल विजिबिलिटी हमें दो कस्टमर को तो सेत तांको भी बहुत माने शांति लागे पीस ऑफ माइंड कि ओके जेटवर्क थ्रू ऑर्डर करले हमको हमरो थिंग्स विल बी ऑन ट्रैक When it started as a small idea, but today we realize it's a big, massive problem. तो मने it's potentially a global and potentially global problem. Today almost हमारा 10-15% हमारा revenue US रो आसे. तो हमारे customers US और suppliers India रहे. तो हमें US customers को India supplier first time introduce कर चुके. मैंने previously China रो किनु थले. तो मने world is changing around us. मने things like GST, simplified ease of business. Without it we probably would not exist. Things like this China +1 जो मैंने US कस्टमर्स कहते कि टैरिफ जो हमें केवल चाइना रो किन परिबन हमको अलग पूरा दुनिया रो किना पड़िबो डाइवर्सिफाई नाउ सम ऑफ दिस थिंग्स हमें एंटिसिपेट करनथलो बट वी वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉलिंग इनटू प्लेस हां किंतु इट ऑल केम डाउन कि वी लव व्हाट वी डू हमको माने इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ सर्टेन वे हमको मजा लगे कि गेटिंग प्रोडक्ट्स मेड हमरा ऑफिस रे अपन देखेबो हमें वी टेक प्राइड हमें या बनेछु हमर डीएनए होची वी आर मेकर्स यू नो तो एनीथिंग बनेबा और एटा मोर फैक्ट्री ओरिजिन्स रहछि मतलब फैक्ट्री बनेबार बहुत मजा लागला कि समथिंग
यार लेगो टॉय परी हां यू आर पुटिंग थिंग्स टुगेदर मोर गोटे पेरेंट्स को पूरा फोटो अछि मोर पिला दिन मु गोटे विंड मिल बनैतले लेगोस रे तो मोर पिला दिन से सब बहुत शौक था Let's talk a little bit about the funding. You are a unicorn now. What's kind of valuation that you have been able to hit? But more than the valuation, I think the more important thing is how many customers, what is the flow through of business that you have, and how many employees all over the country today? Today, we are almost 600 odd customers, of which 500 are in India, 100 are in US. Almost 3,500, 4,000 small manufacturing के संग में काम करूँ. तो ये वर्ष आपको फ्लो थ्रू टर्नओवर कितना हुआ? हाँ तो लास्ट ईयर मैंने हमारे 3 वर्ष था. फर्स्ट ईयर हमारा 16 करोड़ टर्नओवर थिला. सेकंड ईयर हमारा 300 करोड़ टर्नओवर थिला. 16 रु 300. हाँ बोले मैसिव जंप हे गला. नेक्स्ट ईयर 300 रु 900 हे थिला. व्हिच इज स्टिल माने व्हिच इज बेसिकली 2020 रे फुल पैंडेमिक ईयर रे वी स्टिल ग्रो 3x ऑन अ प्रीटी लार्ज बेस. किंतु व्हाट इज हैपनिंग टुडे बे आपण भी एक्सपीरियंस करथिबे कि जेतले हमें स्टिल गोटे मेन स्ट्रीम बिजनेस नुह आम मैंने गोटे पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑपरेट करछु. एही वर्ष कौन है वी आर गेटिंग इनटू द मेन स्ट्रीम. तो टुडे मैंने आम गोटे कस्टमर के पास जीवु ही हैज ऑलरेडी हर्ड अबाउट अस कि हाँ मु जानची मोटा मोटी नेटवर्क कौन करे. तो द इंक्रीमेंटल एफर्ट टू गेट अ न्यू कस्टमर इज गेटिंग लोअर एंड लोअर एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर ग्रोथ रेट इज एक्चुअली गेटिंग हायर इवन दो द स्केल ऑफ द बिजनेस इज हायर. टिपिकली कौन हुए बिजनेस जो बड़ हुए ग्रोथ रेट कम हुए आमर उल्टा हो. तो यही वर्ष आम ऑलमोस्ट 4,500 crores कंटे टच कर जीवो. ऑलमोस्ट 4.5x ग्रोथ. आ एटा हेची कोविड समय रे एटा हेची सब लोक भावंती जे गोटे पैंडेमिक हे जाउची गोटे महामारी हे जाउची से सब किछ बंद हे जाउची किंतु आपण माने निजर एक्सपीरियंस गोटे अलग रकम. हां माने इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर बिजनेस मॉडल. कारण आमे कोन ऑफर करछु आमे कस्टमर को ऑफर करछु कि आपण डिजिटली सप्लायर सिलेक्ट कर परिवे आ सिलेक्ट करला परे आपण डिजिटली तांकर फुल ट्रैकिंग कर परिवे. Now these were all good to have before COVID कि हाँ माने eventually world will get there किंतु आमर किसी हरी नहीं. किंतु in COVID time it became a must have कारण से माने they could not travel. मैन्युफैक्चरिंग के से माने पूरा सप्लायर को ऑडिट करती ये सब 10 things 20 things चेक करती. हमें समझते तंको गोटे बटन क्लिक रे we are able to offer them and suddenly what was a good to have became a must have. So that whole transformation, digital transformation जो an IT services company pioneered. Today we are also kind of helping a lot of these large companies in a different way. कि अपन को parts of your supply chain which is completely offline, we are able to digitize. Now it's very compelling for most people today. So ये जो अपन Zetwork रो कहानी टी कहिले एथिरे गोटी जिनस मन को आसे जे जणे मैन्युफैक्चरर बसचंती बहुत बड़ मैन्युफैक्चरर बसचंती धरंतु ट्रिची रे बा चेन्नई रे बा मुंबई रे आउ जड़े अजणा अशुणा मैन्युफैक्चरर बसचंती मंचेश्वर रे एवं जानिया को चाहिए जे ओडिशा संगे आपनकर कोनसी कनेक्शन रही कि ना किंतु सेटा पर कथा हवा ता मझिरे रहले आपण गारंटी करूचंती जे आपण डिजाइन दियंतु आई विल फाइंड द बेस्ट पॉसिबल मैन्युफैक्चरर इन द गिवन टाइम with the kind of quality you are looking for and ताकू मु visibility देबी केमते तार डिजाइन ठु नै करी आपनकर फैक्ट्री पहुंचवा पर्यंत से जो जिनसटी सुरुखुर रे कि भाव रे हे परियो. एथिरे हुई तो एमती भी हे पारे जे से मैन्युफैक्चरर आपन को देखिनी व्यक्तिगत भाव रे जानिनी बा मंचेश्वर से मैन्युफैक्चर जो जे करूचंती जो पार्ट टी तयारी करछन से मध्य आपन को देखिनांती. सो रेपुटेशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन दिस एंड इन ए इंटरनेट बिजनेस. How do you build reputation? Is reputation a form of capital? Apan kon bhabanti? As you said, reputation it takes a lifetime to build, and sometimes overnight can go away. In India, in hindsight, one of the things which we think is very obvious, kintu it's not very well known. Apan jaha customer ko kahibe, apan se karantu. Just honor your word. Like if you have told your customer कि मैं 30 days रे I'll get this product shipped. Do your best. कहिबी कथा रखिबी. Do your best to and जदी for whatever reason delay होची communicate it on day 1 versus communicate it on day 30. Today कौन हुए if you talk to any of these large companies, they are working with these small manufacturers without us also. एमते नहीं कि we are creating a new industry. किंतु कौन हुए they will take an order from a small manufacturer. से कहिबो कि मैं 30 दिन रे I'll get your product. किंतु 30th day रे
गोटे फोन कॉल आसीबो सर मु काम आरंभ भी करनी मोर गोटे 30th डे भी नुह धरन तो 40th डे रे चारि थरो मिस कॉल दवा पर से फोन करे फोन भी उठेबे नहीं के कोई मोर गोटे रिलेटिव्स को भागरे थिला कि माने बेसिकली पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बोथ इंटरट्वाइंड यू नो स्पेशली इन द स्मॉल बिजनेसेस तो व्हेन यू गो टू दैट सेम कस्टमर एंड से कि आपन को 30 डेज दरकार कम व्हाट हैपेंस वी विल मेक इट हैपन it is a transformative experience for a lot of these companies. So first time तुमको believe करेंगे because you're selling well, but second time they will come back to you only if you have delivered what you said, and third time they will say कि last year में तुमको 100 rupees रो धंधा दे इसलिए I'll give you 300 rupees रो धंधा because they believe कि you are true to your word. You are a critical component of their business success. You're not a vendor. You're a strategic partner. So how do you make that journey? कि you're a transactional relationship रो strategic relationship that can only happen through compounding of reputation, and reputation some of it technology can solve, some of it what the business stands for, you know. We can also say ki industry to late chalchi amar kon parva, but we can run our company the way it is running for the last 10 years 20 years in the industry, kintu we take a point of view we want to make it better. You take a point of view with a long view of time. Your reputation is something that you build only over long, if you have a long view of time. बहुत सुंदर कहले एवं वर्तमान आम कथा हवा आपनकर लाइफ एक्सपीरियंस विषय जोटा को देखि युवपीढ़ी इंस्पायर्ड हो पारे विशेष भाव में जो माने निजर गोटे संस्था करने को चाहूँगी ओडिशार युवपीढ़ी कथा पर्टिकुलरली कहवा से विषय टे कथा हवा किंतु ता आगु अल्प समय कथा हवा जेटवर्क आपनकर बेबी आपन जीवन स्वप्न आपन ड्रीम आपन पर्पस आपन लाइफ रो सब किछि जेटवर्क को आपन आगामी 5 वर्ष रे कोठी की नहीं जीवा को चाहछंती व्हाट आर योर गोल्स योर एम्बिशंस हाउ डू यू सी दिस कंपनी एक्चुअली बिकम ग्लोबल हमें एला आरंभ करथलो एज आई सेड वी फेल इन लव विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमें मैन्युफैक्चरिंग काम को हमको भल लागे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हमें रियलाइज करछु कि दिस इज एक्चुअली मच बिगर देन माय सेल्फ द कंपनी एनीथिंग कारण where we are standing today, Aji, this is the golden age of Indian manufacturing over the next 10 years. Take any sector, take traditional sectors like steel, samaste nuwa plant banochanti. Take industries like consumer electronics, samaste they are moving their production from China to India. Take precision manufacturing, medical device, aerospace. Companies in US are wanting to explore India as a country. So, upon jemti last 10-15 years re pura IT services ro revolution create करथले इंडिया रे created a lot of jobs for people. Amar view अछि कि next 10 years रे that can only happen through having a strong manufacturing base. Absolutely. And of course it takes a whole village to do this. Kintu we want to play our part in catalyzing at least companies outside India who want to explore India as a market. Ki don't worry, we are your number one partner. Ame samasto will handle everything for you. Make sure that all the promises that were kept are met. And it's a massive opportunity, both for driving revenue of course, but societal change. Where India, I read some statistic. The average Indian person is roughly my age, in their late 20s or early 30s, and more people are entering the job force every year. The volume of jobs can only happen by having a strong manufacturing base. So, amaro simple goal hoche to increase the GDP of manufacturing in India broadly by making it more efficient or driving more customers and companies to explore the Indian market. I'm sector agnostic, so we are already doing so much work in industrials, we're doing so much work in apparel, consumer electronics. Amara semte view ne ke ame ei industry pa hi solve karibo kano when we look at the small manufacturer at the heart of your business, tankara problems across the industry saman, tanko orders darkar, predictably orders darkar, tanko execution pe help darkar to create that ecosystem. I mean, there's a lot of depth in Indian manufacturing actually. Of course. Kintu it has not been fully tapped, and that ecosystem does not exist. Yes. So, our view we will create that ecosystem so that every person in that ecosystem can achieve 10x of what they are able to achieve by themselves. So, really, our say platform view of the business. We want to keep very little value inside. So, in 5 years' time, how big in terms of, let's say, revenue that you want Zetwork to be? Sir, we are growing triple digit, 100% plus for the last many years. I don't see any reason why we should stop that. Pick a number. At least we should touch 30-40,000 crores. 40,000 crores in 5 years' time. Yes, sir. 33 ବର୍ଷର ବୟସ ଆପଣଙ୍କର
आपण एबे 40,000 कोटी टंकार स्वप्न देखुछंती यू आर very inspiring just to talk to you. I want to know, what makes you so wise, at 33, you don't come across as somebody who's aggressive, somebody who is ambitious for the sake of ambition. आपन को जदि मु रास्ता रे देखि थांती चिन्हि न थांती अमृताचार्य किए मु भाबी थांती आपन बोधे फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट बोली ए 33 वर्ष बयस रे एते सफलता पाई मध्य आपन how are you so wise, how are you so gentle, how do you actually build, you almost sound unreal, look unreal, to be a unicorn in India today, and globally today. What is it that makes Amritacharya who he is? No, big part of that is my parents. Just stay humble, stay grounded. Some of that definitely comes from our family values and how you grew up. It's taken time, but today I am very self-confident and self-assured. I don't have anything to prove to anybody. At one point I had, good at times, various points in time people have said no to me. Good instinct no I'll show this person next time. Today more say ego ta completely padaichi for whatever reason. And we are very focused on what we are doing. Look when business or defensibility competition asibo to kon karibe. Okay, asan to competition. There is a very big problem. There is more people do it, the better actually. Hopefully we started a new category. And it's a big enough category that more and more people can. You have to be attracted by an abundance mindset, not a constraint mindset. Exactly. That shift happened almost 2-3 years back. Every decision no chu, and we have grown up like that. I remember when I was 10 years old, India Odisha super cyclone hitla 99 re. Almost 1 week pai kichi khaiba hoiba kichi milnatla. Am ghar re gote Amrita Bhandara गच्छ थिला लकीली से हमें तरकारी बने we managed. Seta was a scarcity mindset. How do you survive? Make sure कि next 1 week, next 1 month. And of course that is very important to have that mindset कि गोटे बही अच्छी गोटे only the paranoid survive. So I do have that mindset कि I don't take anything for granted even though Intel रो founder लेके Grove लेके exactly Andy Grove. So seta was I feel it is a base instinct to have. Over the last 2-3 years, more good shift कि I feel fairly comfortable in who I am. Worst case, so whatever reason, if that work doesn't work out, I should be able to find another job. I'll be okay. I am okay professionally. My parents are today well off. They luckily don't depend on me. We have accumulated enough. Thought about savings ki we can get by. So now what does that unlock for you? Ki now that your downside is protected. How can you really shoot for the stars? Today I do feel I have a responsibility beyond just personal success. Beyond just personal success. Like the mission of what we are trying to do is larger than me, is larger than the company. It will outlive us. तबे आपनकर कंपनी बर्तमान वैल्यूएशन होची 10,000 कोटी टंका रु ऊर्ध्वरे आपण 40,000 कोटी टंकार कंपनी तयारी करिवार स्वप्न देखुचंती या भितरे कथा बा वर्तमान को ने कि आपण BMW चढ़ंती ना जागुआर चढ़ंती ना मर्सिडीज बेंज चढ़ंती नहीं मोर टोयोटा चलो जी तो आपनकर क्लब जीवार मानसिकता नहीं आपनकर हाई एंड गाड़ी रो मानसिकता नहीं आपनकर 6टा घर 20 जन व्यक्तिगत लकीली फादर मदर से माने गटे तांकर घर अछि तांको पय भी किछि करिया दरकार नहीं मोर निजर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स पिछि नहीं. I'm happy to wear the same T-shirt I was wearing. Company as long as you have Zitwork written on it. Very nice. So more material. Actually, I've never been attracted by materialism. In fact, amaro both ichha achi philanthropy kare pe at some point when some of the capital that we have accumulated becomes more real. So we don't have any such. Both me and my wife, we share those values. Ki amaro we have enough for what we need. More than enough actually. We have been very lucky and privileged and blessed, and there are certain causes that are interesting to us, and for me it comes down to opportunity basically. It will come in its time. It will present itself. Yeah. What would you advise to young people, particularly in a state like Odisha? Apana
ओडिशा छाड़ी के आछंती किंतु ओडिशार माया मोह आपन को निश्चय घारुथबो ओडिशा को छाड़िबा तो संभव नहीं ओडिशा आपन भीतर रही ओडिशा जो ओडिशार माटी पवन पानी आपन को गढ़ी तो ओडिया हिसाब रे ओडिशार युवपीढ़ी को विशेषकर उद्योगी मान को आपण कौन उपदेश देबे This is my life experience only, so everybody has different journeys. Kintu I think it's very important to acknowledge kutu apna asithile and create that safety net. That safety net can be anything. It can be it's all in the mind. Ki mane different people have different journeys. Kintu somebody who maybe did not come well off, maybe create that safety net of 1-2 years of savings. Taki if you want to take a risk, you tamar nijar किछि ना किछि अच्छी to support you. मो हिसाब रे that 20 to 30 age group is very important. हमें आजिकली in fact we get a lot of new advice कि 20 to 30 just explore करंतु, go party, why माने make friends. All that is very valid. You can start your career at 30 so to speak. I think that is not the best advice in my mind. कारण 20 to 30 रे at least in my mind माने some of your skills are just becoming sharper, and at the same time some of those skills will probably be the best they can ever be. Like and also you will never get the time you'll never get that time back. When today I am thinking like we don't have children yet, we may start a family. It would be so much harder for me to do what I am doing now if I had that additional responsibility. And 20 to 30 day everybody still evaluates you on your potential. Ki this person has so much potential. They don't evaluate you on your track record. Once you start hitting that certain milestone in your life, you will of course people will look at you as your potential. People will also say what you have done in the last 10 years. So that age is a beautiful time to just do completely explore yourself. Take decisions from a slightly long-term view. Of course, you should enjoy yourself personally, do those things also. Kintu from a professional standpoint, it means just say yes to every opportunity you get. Gravitate towards your potential. Yeah, I mean, if somebody finding mentors is very important. Like I would not be where I am. Jadi mo life re Sanjeev Rangra, so various mentors have been. Somehow they decided that they want to help me. I don't know why, but I'm very lucky that they chose to, and they took me under their wing in some way. Find those mentors. You can't figure out your life by yourself. It's very hard. Even in the early stages of your life, your parents are your mentors. At some point, in my case, my parents were not able to help me beyond a point, and then I had to find different mentors. Yes. And Bahi Padiba. Bahis are amazing. Lokumane have tried probably the same things you are trying. They've maybe made mistakes and they've maybe succeeded, and they have synthesized their entire journey into like a book which you can consume in 2 hours. Mane tankar pura life ro journeys you can learn in 2 hours and realize कि हम ये mistake टा करी भी नहीं. तो read a lot, experiment a lot. कारणो no जो मैंने अपना मुँह हो कि अपना होबे कि रतन टाटा होबे समस्त mistake तो करंदे ही करंदे. आउ same mistake repeat करिया कथा नुआ. More and more mistakes कले your spread of knowledge increases. That is my general recommendation. कि in your early career, just go as broad as possible. So to begin your life as an entrepreneur, there are few things, and go back to your first maybe 180 days of Zitwork. See समय कथा मने पके किटे कहंतु जे if I were to start, imagine that I am actually a startup entrepreneur in Odisha. आमर किट बायोटेक पार्क हो बा आमर STPI इनक्यूबेटर हो बा धरंतु मो NIT रो इनक्यूबेटर अछि मु कोन करिया उचित जो 3-4टा जिंस निश्चित भाव रे एज अ स्टार्टअप मोर भाबिवा दरकार. माने नंबर 1 थिंग होची कि हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू, वेदर एंड इट स्टार्ट्स विथ योर इमीडिएट फैमिली. मेक देम पार्ट ऑफ द जर्नी कि मु एहा करूची सपोर्ट एंड मे बी वेरी क्लियर विथ देम कि एतिकी टाइम पे भी मु करिवि. जदि हबनी देन आई विल मे बी कम बैक. देन इट गिव्स देम दैट assurance कि it is a risk but it is a calculated risk. In my case, my father, he put a deadline on me कि you have to figure it out by the time you're married. But it did help me कि हाँ, I have 12 months. 12 months I will have no interference, and in that 12 months I have to go all in. Very, very focused. To build number 1, you are saying, is build an emotional contract with your loved ones, your near and dear ones. Yes, very important. Because
they are there for you when you're successful, they're there when you're not successful, and it's important to make them feel that they're part of your life's journey. What is the second thing? Second thing is, मैंने company building रे गुड़े जिनसे दरकार. I think you have to distill it to that one thing which you think can take your company to the next level. In startup language, there is this word called product market fit. मैंने आपण जहाँ बनौचंती तार market रे requirement अच्छी की नहीं. And don't have illusions about it. हाँ, मैंने obviously you should go in with a hypothesis. आपण एमती नहीं कि मु I'll go all over the board and I'll let the universe guide me. You should have a point of view कि मु यही problem solve करिया पे जाऊँची, आउ यही problem solve करिया पे I'll get feedback as quickly as possible. कारण things take time, and it's very important to listen well at that stage. कारण as entrepreneurs we always have a point of view कि हमें company start करचु कारण we feel we identify this gap in the market. Now you may be right, you may be wrong. Correct. And you have to have that discipline to take yourself out of that equation. Right. कि, I mean, there basically in my view there are two types of entrepreneurs. There is one who is creating a new market. Uber kala, they created a new market completely. Or there's companies like us which take a market and make it better. You have to be clear which business you're in. If you're creating a new market, then it's a very different playbook. If you're making the market better, then you have to keep listening to the market. Yes. The market is always giving you feedback कि तुम्हें यह करो, and if you do this, then it is widely applicable. So everything else is a distraction. Whether it is finding an office space, just go with the least possible thing that makes you comfortable. Whether you want to hire the best people, all of these things can wait. But in that first 3 months, 6 months, even 1 year journey, discovering and narrowing down what is it that your company is going to do. Of course, that will also evolve over a period of time, but that getting as close to the truth of the market. आपण एते कहउचंती किंतु आपण टंका कथा पर्यंत कहलेनी लोक साधारणतः भाबंती जे सब किछि केवल टंका ऊपर डिपेंड करे कि मो कंपनी इन्वेस्ट करिवो. तो आपण संजीवंगुठू टंका नेथिले निज टंका निज सेविंग्स भी एकाठी करिकि पुंजी ठुल करथिले एवं परवर्ती काल रे आपण वेंचर कैपिटलिस्ट मान को टंका नेचंदी. सेही विषय टे कहंतु जे हाउ शुड यू, व्हाट इज इट दैट यू मस्ट डू सो दैट investors will be inspired to invest in you? See, investors, again, you have to realize that they're ultimately backing entrepreneurs. Those investors can't create new ideas, they can't find new insights of the market. There are very few investors who are like that. Mostly they will say that entrepreneurs ideas generate kurchandi, and of these ideas, this 1 or 2 ideas sounds really good. And then it comes down to how do you become one of those 1 or 2 ideas. So that ultimately comes down to how deeply you understand the problem. Now that can happen over 3 months, it can happen over 6 months. In our case, because we had that experience of, I built a factory, my co-founder knew, his family business was in manufacturing. We were not complete outsiders. We understood the problem to some extent because we had personally gone through that problem. So that is always a great resource. When I find something which you've personally experienced, it can be something as esoteric as ours, or it can be something more normal. Some people, I know a lot of entrepreneurs, Uber example, they were not able to find a cab, and hence that's how they started their journey. Having that personal connect with the problem, because this is a long journey, it's 5 years, 10 years. If you don't enjoy what you do, no amount of capital, no amount of convincing yourself that I'm succeeding can last that long term. So I have this, since you are an ex-McKinsey guy, you would relate to this. So I have a model which I call my 2x2 model, where on the Y side I track what you love, and on the X side I track what you're good at. Yeah. And the key is to be on the top right hand corner, do something which you love and you're competent at, and that's the golden quadrant. And you may not succeed, but it at least gives you the higher tenacity to stay with the problem long. Today, that's what we do. Today, 50% of my time is just articulating to new people who've joined the company and reinforcing to all the existing people, why do we exist as a company? I don't spend my time I have to go and win a new customer. I've taken myself out of that. It is just about direction setting, goal setting, culture building, and oftentimes that takes everything else takes care of. If people are aligned, we are here to solve this one problem, and we live and breathe it every day,
lot of magic can happen. बहुत सीरियस कथा है गला बर्तमान आपण कहंतु जे आपण माने ए जो एंटरप्रेन्योरियल लाइफ रे what was the funniest moment that makes you laugh even today when you think about it? There must have been some funny moment somewhere, you know. Funny to कहे होबनी किंतु but some of the things we have done which are so unscalable today, but in that moment we felt ki this is the biggest problem of our life and we have to go all in. Like our first international customer थिला company in Bangladesh. आउ से ship product order करथिले हमें ताकू ship करथिलु रास्ता रे मझे ट्रक कोडे गायब हो गला तो go legala and we are trying to call that guy, he's not picking up our call. Turned out ki later we found out ki he tar gare in somewhere in that West Bengal Bihar belt, he had just taken a break for a few days and he had turned off his phone. अब बीच में we are just माल पड़ी तरह and we are just getting call after call after call after call and we have no answer. That's when we realized कि हमको tracking दरकार actually. Throughout that was one of the insights from this whole journey. But this is very interesting because आपण एते serious बड़ बड़ कथा करिवे बड़ बड़ business plan करिवे last को माल नहीं कि से लोकटा engine बंद करी mobile बंद कर दे पड़ेबो. So you are back to square one. And then we deployed. That time we were 20% company. We deployed 5 people. Ki just find out ये truck कुटी अछि. And they ultimately found this guy. And then से truck रे पुनी बसिले और गले पूरा border जाए. Oh, they went with the truck. To make sure कि border cross करू truck. तापरे से West Bengal border रू फेरी के आसले. Very nice. But it kind of comes under values. We wanted to make sure our customers got what they asked for. And you had to go the last mile, literally. Yeah. The truck, the last mile. It's completely unscalable. Beyond the border. And push the border in the process. So that was lovely talking to you, Amrit. बहुत भल लगिला, बहुत भल लगिला. आपण एमती थांतो आसंता 30 वर्ष 40 वर्ष पर्यंत आपण निश्चय पृथ्वी गोटे सुंदर जगह करी गढ़ी तोलिबे. केवल व्यवसाय नुह व्यवसाय बाहर मध्य आपनकर इंपैक्ट रहिबो. सुस्थ रहिबे, निरापद रहिबे. बहुत भल लगिला. धन्यवाद. नमस्कार. थैंक यू सो मच. ये थिले अमृत आचार्य जहाँ को नहीं प्रत्येकटी ओडियार गर्व एवं गौरव रहा दरकार. एवं आमर आशा आगामी दिन मानकरे अमृत आचार्य तांका कंपनी को आहुरी आगु नहीं जिवे एवं गोटे विश्वमानर कंपनी जहाँ से ठिया करिसेंती ता निश्चय आम समस्तंक पई नुआ नुआ बाट देखैबो. Let's wait for the next 40 years to see where Zetwork will go and how Amrit Acharya will blossom as both an entrepreneur and a human being. Stay tuned.